सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करना है कि आज सदन में विशेष दीर्घा में सूरीनाम गणराज्य की नेशनल असेंबली के चेयरमैन महामहिम श्री मरीनूस बे और उनके साथ आए सूरीनाम के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य विराजमान हैं। मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से सभी माननीय सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए हमारे सम्मानित अतिथि श्री मरीनूस बे और वहाँ के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का भारत आगमन रविवार 4 फरवरी 2024 को हुआ था। शिष्टमंडल के सदस्य दिल्ली के अतीत अयोध्या एवं आगरा की यात्रा भी करेंगे। उनका गुरुवार दिनांक 8 फरवरी 2024 को भारत से प्रस्थान होगा। हम अपने देश में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम सूरीनाम की संसद, वहाँ की सरकार, वहाँ की मित्रवत जनता को अपनी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को नामीबिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर हांगे जी गाइनगोब के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। श्री हांगे जी गाइनगोब नामीबिया के स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और वहाँ की संविधान सभा के अध्यक्ष थे तथा वह स्वतंत्र नामीबिया के पहले प्रधानमंत्री और देश के तीसरे राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देशवासियों के कल्याण और अपने देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। राष्ट्रपति गाइनगोब के भारत के से भी बहुत मित्रवत संबंध थे। वर्ष 1995 तथा वर्ष 2015 में उन्होंने भारत की यात्रा भी की थी। सितंबर 2022 में नामीबिया के 8 चीतों को भारत में स्थानांतरित करने के प्रोजेक्ट में भी राष्ट्रपति डॉक्टर गाइनगोब की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही। उनका देहांत 4 फरवरी 2024 को नामीबिया की राजधानी विंडहोक में 82 वर्ष में हुआ। ये सभा नामीबिया के राष्ट्रपति डॉक्टर हांगे गाइनगोब के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है। दिवंगत नेता के परिवार के प्रति भी गहरी संवेदना व्यक्त करती है तथा नामीबिया की सरकार वहाँ के नागरिकों के प्रति भी अपनी एकजुटता व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत नेता के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 21 श्री बजेंद्र सिंह जी। सर, प्रश्न संख्या 21। माननीय मंत्री महोदय। उत्तर सभापति को दिया गया। माननीय सदस्य। सर, मैं मंत्री जी का आभार जताता हूं कि उन्होंने बड़े विस्तार से मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है। उसमें उल्लेख किया गया कि सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन का समावेश कर समग्र शिक्षा अभियान की रचना की गई। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि समग्र शिक्षा अभियान की इम्प्लीमेंटेशन के बाद से
क्या लड़कियों की एनरोलमेंट में कोई बढ़ोतरी देखी गई है, खास तौर पे उन इलाकों में जहां फीमेल लिटरेसी का अभाव है? इसे बेहतर करने के भी क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कृपया इसका भी उल्लेख करें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 34 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से शिक्षा को समग्रता एवं समावेशी रूप में कैसे रखा जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके तहत कई सुधारों का प्रावधान भी है और इसके कार्यान्वयन में कई गतिविधियां भी शामिल है। और जिस तरह से माननीय सदस्य ने ये पूछा है लड़कियों के इनरोलमेंट के बारे में, तो मुझे बताते हुए भी खुशी हो रही है कि समग्र शिक्षा अभियान के बाद से 2014-15 से 2022-23 तक का अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा लड़कियों के इनरोलमेंट में भी वृद्धि हुई है और बच्चियां स्कूल में आए, वो बेहतर शिक्षा ले, इसके लिए कई ऐसे पहल हमारे माध्यम से शिक्षा विभाग के माध्यम से किए गए हैं। और उसमें लगभग हम देखें तो 9 वर्षों में अभी तक 1,20,000 से अधिक छात्राओं के लिए शौचालय का निर्माण किया गया है। अलग अलग तरह से जैसे जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है उसके माध्यम 14-15 से लेकर 22-23 तक अभी तक लगभग 336 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को 8वीं से 10वीं ग्रेड में अपग्रेड किया गया है और 1503 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को 8वीं से 12वीं तक अपग्रेड किया गया है। इसके साथ ही साथ बच्चियों को असुविधा ना हो इसके लिए पास के स्कूल को अपग्रेड भी किया गया है। विद्यालय का निर्माण समग्र रूप से हो और उसके साथ ही साथ वित्तीय सहायता भी दी जाती है। जैसे बच्चियों को फ्री टेक्स्ट बुक दी जाती है 8वीं तक के छात्राओं को, उसके साथ ही साथ फ्री में यूनिफॉर्म दिया जाता है। इसके साथ दिव्यांग बच्चियों को 12वीं तक का उसे स्टाइपेंड दिया जाता है। बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जाती है। बच्चियों को NMMS स्कॉलरशिप भी दी जाती है। तो इस तरह से समग्र शिक्षा के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं और बहुत ही इनरोलमेंट भी बच्चियों का बढ़ रहा है। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। जी सर। सर, मंत्री जी ने अपने जवाब में उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री को 2022 से शुरू किया गया, जिसमें देश के करीब 14,500 स्कूल चयनित किए गए हैं जिनके स्तर में बेहतरी की जाएगी। और इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि उसमें से 114 PM श्री स्कूल जो हैं वो हरियाणा से भी चयनित किए गए हैं। उत्तर में ये बताया गया कि जो मेजर इंटरवेंशंस हैं PM श्री के माध्यम से उसके 10 बिंदु दिए गए हैं। मैं सिर्फ आखिरी बिंदु को पढ़ना चाहूँगा, जिसमें लिखा है कि वोकेशनल इंटरवेंशंस एंड एनहांसिंग इंटर्नशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली विद लोकल इंडस्ट्री, मैपिंग ऑफ स्किल्स विद डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स with nearby industry and develop courses and curriculum accordingly। मैं इस संदर्भ में आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जिन वोकेशनल इंटरवेंशंस का और स्किल को डेवलप करने का प्रयास होगा और जो कोर्स और करिकुलम को भी उस प्रकार से विकसित किया जाएगा, उसके लिए क्या नए शिक्षकों की भर्ती इसमें की जाएगी या जो मौजूदा शिक्षक हमारी व्यवस्था में हैं उन्हीं को बेहतर ट्रेनिंग करके ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये जो ध्येय है PM श्री का, इसकी हम प्राप्ति कर सकें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, PM श्री विद्यालय के बारे में जो माननीय सदस्य ने कहा है, बिल्कुल ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमारे ऐसे विद्यालय हों जो कि वो अग्रणी भूमिका में काम आए और वो निभाए, और उसी के तहत PM श्री विद्यालय की शुरुआत की गई। और PM श्री के कुछ PM श्री विद्यालय चयनित होने के 14,500 PM श्री विद्यालय चयनित होना है, तो जिसमें 6,000 से ज़्यादा भी चयनित हो चुके हैं और उसके कुछ मानदंड है, उसके अनुसार ये चयनित होते हैं, चैलेंज मेथड के तहत चयनित होते हैं। तो प्रदेशों के द्वारा जो विद्यालय चलाए जा रहे हैं या फिर हमारे केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं,
वैसे विद्यालय उस श्रेणी में जो चैलेंज मेथड को पार करके आते हैं उसको हम चयनित करते हैं, और उसके साथ ही साथ चूँकि हम उसके लिए ग्रांट देते हैं कि अच्छी विद्यालय की अवसंरचना अच्छी हो, वहाँ पे शिक्षक आए और वो एक उस प्रखंड स्तर पर या फिर वो आसपास के विद्यालय में को भी बेहतर ढंग से वो गाइड कर सके। तो इसके लिए कई इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और इसके साथ ही हम उसमें ग्रांट भी दे रहे हैं। जो 6000 से ज़्यादा विद्यालय चयनित हुए हैं उसको हम हेल्प भी कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हरियाणा में भी ऐसे विद्यालय चयनित किए गए हैं और ऐसे भी शिक्षा समवर्ती सूची में है, लेकिन ये हमारी प्राथमिकता है कि शिक्षा को हम बेहतर करें। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस और नए नए इनिशिएटिव ले रहे हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ साथ समग्र शिक्षा और पीएम श्री के माध्यम से ये हमारा प्रयास है कि हम अच्छे विद्यालय और अच्छी एजुकेशन, हम अच्छी शिक्षा बच्चों को दें। इसके तहत ये काम किए जा रहे हैं। और शिक्षकों को भी हम अलग अलग स्तर पर, जैसे शिक्षकों के लिए उन्होंने कहा है तो निष्ठा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम शिक्षकों को उसके आवश्यकता के अनुसार समय समय पर उन्हें ट्रेनिंग कराते हैं। इसके साथ ही साथ डाइट्स है, जो डाइट्स को जिला स्तर पर सुदृढ़ करने का निर्णय हमने लिया है। उसमें पिछले बजट में भी 100 से ज़्यादा डाइट्स को चिन्हित भी किया गया है, जो सेंटर फॉर एक्सेलेंस के रूप में हम उसे चिन्हित करेंगे और उसमें काम करेंगे, जिसमें एक करनाल भी है। और इसके साथ ही साथ आईटेप है, जो आईटेप 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स भी है जो लागू हो चुका है और उसमें शिक्षक किसी एक विषय में ही विशिष्टता हासिल करेंगे इस आईटेप के माध्यम से। तो अलग अलग माध्यम से ये हमारी सोच है, ये हमारा प्रयास है कि हम अच्छी शिक्षा बच्चों को दें। धन्यवाद। माननीय विष्णु प्रसाद जी। For giving me an opportunity to speak on the Ministry of Education. Primary education is paramount importance for all the students because the education, the primary level, is a fundamental for any child till their end. At this stage, I would like to mention that in Tiruvannamalai, there is a Kendriya Vidyalaya. I appreciate the government's efforts in including English and Hindi at all levels. We welcome it. But at the same time, the students are finding difficult because most of the teachers are Hindi-speaking teachers. But the students are finding difficult to understand at this primary level. So at least to certain point, some extent, if the teachers are from the local region, then the understanding capacity can be increased manifold from teachers to students. So will the government be kind enough to think in this issue and recruit the teachers from the regional level at all regions? Because our Honorable Prime Minister is very much proud of our Tamil language, and wherever he goes, he talks about Thirukural. But unfortunately, in my state, especially in Tiruvannamalai, we find local teachers are not from Tamil Nadu, they are mostly from North India, and that is why students are finding difficult to understand the subject. Kindly consider, and will the government be kind enough to consider this request? Thank you. अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो मातृभाषा पर जोर देती है, मातृभाषा भारतीय भाषा पर, और ये हमेशा से ये हम सब चाहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं, मातृभाषा के बारे में वो बताते भी हैं। तो ये हम जो देख रहे हैं एनईपी में भी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी 3 लैंग्वेज पॉलिसी की बात हम कहते हैं, ताकि बच्चों को समझने में, सीखने में दिक्कत ना हो। और उसके तहत ऐसे शिक्षा की बात अगर हम करें तो शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में आती है, तो जिसके तहत बहुत सारे जो राज्य के विद्यालय हैं वो अपने हिसाब से वो बच्चों को शिक्षा दे, वहाँ पे उपस्थित हैं, वो बच्चों को उनके भाषा में वो सिखाए। श्री मलुक नागर जी। जी अध्यक्ष जी, थैंक यू। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं। मैंने सदन में कई बार मुद्दा उठाया और हमारा बिजनौर, जहां से मैं एमपी हूं,
वहाँ 3 लोकसभा पड़ती हैं, उत्तर प्रदेश सरकार पे पहुँच जाती है, अधिकारी पे पहुँच जाती है, ज़मीन भी चिन्हित नहीं हुई, तो वहाँ सेंट्रल स्कूल कब होगा? और एक दूसरा साहब कहना चाहता हूँ, देश की सरकार बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, जो बाउंड्री है देश की, तो जो सीमा पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जो मुसलमान गुजर हैं, वहाँ स्कूलों की बहुत कमी है, कि क्या बड़ा लड़कियों का कोई स्कूल वहाँ खोलने की सरकार की योजना है? अध्यक्ष महोदय, ये चूँकि केंद्रीय विद्यालय खोलना एक सतत प्रक्रिया है, और जहाँ तक बच्चियों के लिए है तो ऐसा कोई जैसे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खुले जाते हैं, तो जहाँ जहाँ जो बैकवर्ड इससे ऐसे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि राज्य की विशेष जवाबदेही राज्य की होती है समवर्ती सूची में आने के वजह से, तो राज्य सरकार इस पर विशेष रूप से हर एक सरकार अपने अपने स्तर से इनिशिएटिव लेती है, और नए नए तरीके से चाहे विद्यालय खोलना हो या विद्यालय को अपग्रेड करना हो, ये एक सतत प्रक्रिया के तहत वो काम करती है। श्री नामा नागेश्वर राव। थैंक यू स्पीकर साहब। तब विद्या जो है, जो बच्चा लोग विलेज लेवल पे जो रहता है, वो लोगों के लिए विद्या बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी ऑनरेबल मिनिस्टर ने विद्या का बारे में जो जो ये गवर्नमेंट जो लिया वो सब बता दिया, बहुत अच्छा बात है। मगर तेलंगाना का जो है ना, हम लोग नवोदय विद्यालय पूरा देश में हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक एक नवोदय विद्यालय देता है। हमारे तेलंगाना के लिए 33 डिस्ट्रिक्ट था, बहुत दफ़ा ये हाउस में हम लोग उठाया है, और एक एक डिस्ट्रिक्ट एक एक नवोदय विद्यालय देने का था, मगर टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ जो है ना 9 नवोदय विद्यालय दिया है। बाकी कब तक दे सकता है? कि बोलता दिस इज़ द ओनली स्टेट में जो है ना, एंटायर कंट्री में ये स्टेट में सिर्फ जो है नवोदय विद्यालय डिस्ट्रिक्ट को एक नहीं दिया है। हम ये बात को मंत्री हम बहुत दफ़ा जो है ना हम लोग पूछा है, अभी हम मंत्री जी से ना ये क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं। थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे तो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी एक जानकारी माननीय सदस्य को ये मैं देना चाहती हूँ कि ये नवोदय विद्यालय खोलना एक सतत प्रक्रिया है, और जिसके तहत कई उसके पैरामीटर्स है, और उसके तहत वो किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से फिर उससे संबंधित माननीय सदस्य लाएंगे प्रश्न, फिर इसके बारे में हम जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 22, पीवी मिथुन रेड्डी। माननीय मंत्री जी। Sir, an answer is laid on the table of the House. श्री के राम मोहन नायडू। Sir, for the last 4 years, the state of Andhra Pradesh has been suffering extensively due to financial mismanagement, sir, which is being carried out by the present state government. It has not been able to pay the salaries of the employees. There is close to zero expenditure being spent on infrastructure like roads. There is mismanagement, diversion of funds which are being sent by the center to the state government, sir. Sir, in this, I want to mention to the Honorable Minister that when there is a financial crisis in the state, number one is the malintention of the state government itself. Number two is when the state government is not able to maintain financial discipline, sir. What I mean by this is there are FRBM limits that are already there. But with the states, due to its own greed, it is borrowing much more than the limits. And when the limits come into the picture, when they are close to the FRBM limits, they are trying to use the state-owned corporations to raise much more money, sir, which is pushing the state into much more debt, but maybe it's not being shown under the FRBM limits. And one such example for the state of Andhra Pradesh, the present government, sir, it has promised that it is going to go... Sir, I'll just finish, sir. It has promised that it's going to do liquor ban. And now it is so hypocritical that the AP State Beverages Corporation, which is going to sell liquor, and they are taking funds by issuing bonds through this corporation, sir, and increasing the borrowings of the state. I just want to know through the Honorable Minister, when the state is not following this financial discipline, what is the responsibility of the center to ensure there is proper financial discipline in the state, sir? Thank you. Sir, the Honorable Member referred to the FRBM Act, sir, which is essentially an act which, of course, in center we do have, and every state has its own FRBM. So, in other words, the FRBM for Andhra Pradesh would be something which the assembly there will be seized of the matter, and per their act, they should take the discussion forward in the House, if anything at all. One.
Second, as regards the kind of nudging or suggestion or oversight that we can have is derived from the Article 293 of the Constitution, which periodically we keep doing. I just want to inform the Honourable Member through you, sir, that these are steps which we take. N.K. Premchandan. Sir, thank you very much for giving this opportunity to ask a supplementary on GST. So the GST compensation is a big controversial issue now in the country. Most of the states are complaining and also making a suggestion and memorandum to the Government of India to extend the GST compensation period so that the state will be financially empowered. See, I would like to know from the Honourable Minister, because it has already been the term of paying compensation, GST compensation has already been expired on 30th June 2022. So I would like to know from the Honourable Minister, if it is continuing, it is an anticipatory question I would like to know academically from the Honourable Minister, if it continues, that if the GST compensation payable to the states continues even after June 2022 at the present stage, how many states are eligible for getting GST compensation as per the statistical data available with the government? Because so many allegations are coming that since the GST compensation is not being paid, the states are in big financial trouble, and the stress is because of the GST compensation is not being paid. So I would like to know from the Honourable Minister regarding this. And also, Madam may be remembering that the last session, the same question was put regarding the IGST also. The integrated GST also not being paid to the state because they have not submitted the proper records, and the Honourable Minister has directed me to discuss with the state government and let them supply all the documents regarding it. I hope that the state government has already mentioned all the documents have already been submitted, whether the payment has duly been given. Conclude. These are the two supplements. Thank you very much, sir. So the Honourable Member has raised quite a lot of issues in his questions, and if you allow me, I would like to answer each one of them. Sir, the GST law and the one specifically on the compensation, as the Honourable Member rightly pointed out, expired as of 30th June, meaning giving compensation to fill the gap between that assumed income and shortfall has come to an end as of 30th June 2022. The Council subsequently, because all of us underwent the COVID pandemic, when we didn't have revenues at all, we had to borrow money and keep giving the compensation. That borrowed money has to be serviced and to be returned. So, under the GST Act, which provided for the compensation, because it is the compensation which will have to be paid back to the states for the period which was covered by that act, and that had to be borrowed, and now the borrowing will have to be paid. With the advice of the Attorney General of India, the Council took a decision to extend collecting compensation cess till such a time just that borrowed money and the interest that has to be paid to it are repaid. So 30th June 2022, paying of compensation per se has come to an end. The Act allows us to extend collecting the compensation cess for paying the compensation till 2026 March, only on account of repaying the principal and servicing the interest for that amount for the borrowing that was done. And that borrowing was done purely for giving the compensation during that period ending 30 June 2022. So the compensation cess is getting collected now beyond 2022 only for that point and nothing else. And that technically will have to come to an end by 30th March 2026. Hopefully we'll be able to pay it back even earlier. Any extension of paying compensation beyond the amount which is being borrowed is not envisaged in the Act.
and the GST Council has had several discussions on this. It is not envisaged in the Act to extend the compensation cess collection beyond 30th June 2022. That extension which I explained, which is going on till 26, is only as regards borrowed money which has to be paid back. That borrowing was purely for paying the compensation. So that is the true position, one. Second, compensation cess not being paid. I've explained this a lot of times. I'm seeking your indulgence so that I can explain it again. 30th June 2022 was the last date when we started collecting, when we kept collecting the cess, and with the cess collected, we are paying for the states. Paying for the states, the compensation happens every time the state produces with the AG's certificate saying this is the compensation due to us, please pay it. The moment that comes in with the AG's certificate, we pay it. Honorable Member N.K. Premchandran comes from Kerala. I would like to give him the factual position as of now. Kerala has, AG's certificate has been received from Kerala 4 years, except for 22-23 first quarter. 22-23 first quarter, Kerala has not sent the AG's certificate as yet. Any payment will be processed now that the AG's certificate has been received. And that is the principle on which compensation cess is being given to every state. Every other state has probably given, except for Nagaland, which has not given AG's certificate for any year beginning 2017-18. Sikkim has not given for 3 years, West Bengal has not given for 4 years, and so on. It varies, the position varies. So the moment the claim comes along with an AG certificate, we release the compensation amount, sir. We are not holding back compensation amount for any other reason except if AG certificate has not reached us. अजय रंजन जी, ऐसे तो डिटेल में जवाब दे दिया माननीय मंत्री जी ने. Madam, so the devolution of taxes, including GST, everything has been prescribed by our constitutions, and it is a constitutional mandate which is to be abided by you. But madam, don't take it otherwise. There is a general perception being grown across the nation that non-BJP ruled states are being deprived from having their legitimate due. The latest example is Karnataka, where the entire ministry has been agitating against the indiscriminate and arbitrary attitude of your administrations. They are alleging that they are being famished by sheer discrimination being played from your ministry. I would like to know whether state government of Karnataka has been deprived from obtaining their legitimate due, because few months ago the situation was not there. That time everything was going hunky-dory. But after the new installation of government, because the non-BJP government has been assumed there, since then that trouble has been started on. What is the reason behind this kind of deprivation? Tamil Nadu also. Sir, devolution to the states, this is beyond, of course, this question, sir, but still, because it's an important question on which the leader of the opposition is asking a question, I would certainly respond. Devolution to the states happens in the direct tax matters as per the recommendation given by the Finance Commission. The GST, particularly the SGST, the state GST, goes 100% to the states. No one can do anything with it. It has automatic provision that 100% collected by the states will be with them. I repeat, 100% is with them. IGST is collected because it involves a lot of interstate payments. It is periodically reviewed also by the GST Council. It is because states should get the money in their hand, roughly, grossly, 50% is divided, and then periodically it is readjusted to actuals.
So if a state were to get 41 and not 50, adjustment happens. If a state were to get 52, adjustment happens. So every now and then, when money gets accumulated under the IGST, it is divided grossly at 50-50 to all states and gets reconciled over the time according to the data that comes up. The CGST is divided as per the advice, 42% goes of the Finance Commission. So if this is direct tax, GST, sir, direct taxation is completely determined by the proportions decided and suggested and accepted and implemented by the central government. Now, of course, some states, and this rate fixation is nothing to do with the government of India. Rate fixation as to how much should go to a state is done by the Finance Commission. And does the Finance Commission sit in one place and take a call on it? No. It goes all over, meets with every state government, talks to them, and only then submits the report. I want to humbly submit before you so that Adhirji, please understand, I don't have the right to change as per my whims and fancies that I like a state or this state is against my party politics and therefore, no way. I have no role. In fact, I would have to follow it 100%. And that's what I've done in my term here. And that's what every finance minister does in their term. Finance Commission giving recommendation, that which I have to implement, it is done without any kind of fear or favor or anything like that. So this apprehension that some states are being discriminated against is a politically vitiated narrative which, I'm sorry to say, vested interests are happy to go about saying it. There's just not a possibility that any finance minister can intervene to say, I don't like this state, stop the payment. No way. It cannot happen that way. The systems are well placed that the recommendations of the Finance Commission for every month's devolution will have to happen. But now that Adhirji himself has said, politically you're doing this, I want to also say, and I want to. All right, let me answer your first question and also join you on your second additional point. Sir, Adhir Ranjanji saying in this first place only said 6 months, till 6 months it was all hunky-dory, now it's not. Can I, seeking your indulgence, say, till 6 months if it was hunky-dory, what's going wrong now? Have you started spending on items which you were not supposed to spend? I'm not even questioning that, do spend it, but don't put the blame on me. Don't put the blame on the center because it goes by the rule book, it has to give it, it will give. If the expenditure are going into areas which cannot be sustained by your budget, I'm not answerable for that. So, Adhirji, I'm sorry, till 6 months ago, which government was there, it's not my role now to talk. Hunky-dory it was. No, it's not. Introspect, please. You're saying that, I didn't say that.